मैं मोनाज आप सभी का सोशल संवाद में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़े हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे आज की गेस्ट है डॉक्टर सुमन मिश्रा, जो कि कुवैत से ऑनलाइन हमारे खास शो में जुड़े हैं, जो दांतों की समस्या और देखभाल के संबंध में आपको जानकारी देंगे। इनके बारे में आपको बताते चले कि ये छपरा बिहार के रहने वाले हैं और अभी कुवैत में एज अ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन मिश्रा, जिन्हें लास्ट 10 इयर्स से उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से लगातार बेस्ट सर्विस देने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से अवॉर्डेड किया गया है। इन्होंने देश विदेश में कई सारे फ्री डेंटल मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की है। अब इनकी इच्छा है कि वो अपने मदरलैंड बिहार में भी फ्री चेकअप कैंप लगाकर लोगों की सेवा करें। हम आपको मिलवाते हैं सुमन मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सोशल संवाद में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को शॉर्ट में और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाज जी और आपके टीम सोशल संवाद को। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, मैंने अपना BDS बैचलर्स मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ किया है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में गया, जहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनर्स के साथ जॉब किया। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में मास्टर्स इन क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री किया। बाद में मैंने स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ कम्ब्रिया NHS ट्रस्ट में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का पोस्ट पे काम किया और ऑलमोस्ट 11 इयर्स से कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में काम कर रहा हूँ। और इसी पीछे मैं बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज, आउटरीच प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सर्विसेज करता रहता हूँ। इसके लिए नेपाल में भी गया, त्रिपुरा में गया, दिल्ली, यूपी में बहुत सारे कैंप्स लगाए और यहाँ पे भी इंडोनेशियन कम्युनिटी के साथ और भी बहुत सारे कम्युनिटीज, सीरियन, इजिप्शियन, लेबनीज, पैलेस्टीन, जॉर्डन, कुवैतीज, इन सब के साथ मैं लिएज करके काम करता रहता हूँ एंड उनको सोशल सर्विसेज उनके साथ करता रहता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हमारे जीवन में दांतों का क्या महत्व है? हाँ जी मोनाज जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में कितनी बार हम मेकअप करते हैं, आउटर अपीयरेंसेस को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं दांतों के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में, माउथ के बारे में। कितने सारे पेशेंट्स से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम ब्रश करने के लिए। आई वाज शॉक्ड कि ब्रश करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट में हूँ, तो चाइल्ड डेंटिस्ट का ये रोल होता है कि बच्चों का बिहेवियर शेप करे। सो बच्चे छोटे होते हैं, यंग इम्प्रेशनेबल माइंड होते हैं और वो फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ ए सोसाइटी होते हैं। और अगर हम उनको कम्युनिकेट करें तो वो बातें स्कूल में भी फैलाएंगे और टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो ये जल्दी फैलता है और वी कैन मोल्ड देयर बिहेवियर फॉर द फ्यूचर ऑफ ए सोसाइटी। तो ओरल हेल्थ क्यों, ओरल हेल्थ, माउथ हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि जो माउथ होता है फॉर्म्स द पोर्टल ऑफ एंट्री, गेटवे ऑफ एंट्री टू द होल बॉडी। जो भी कुछ हम खाना लेते हैं, पीते हैं, कुछ भी, सब कुछ मुंह से होकर जाता है। ओके, तो ओरल हेल्थ, माउथ की हेल्थ, डेंटल हेल्थ, गम्स की हेल्थ, इन सब की हेल्थ जो होती है ना, वो पूरे जनरल हेल्थ, एक पर्सन के जनरल हेल्थ की रिफ्लेक्शन होती है। हम जब खाना खाते हैं तो उनको चू करने के लिए, ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, उसके लिए हेल्दी दांत होने जरूरी होते हैं। अगर दांतों में कैविटीज होंगे, अगर दांतों में पेन है, गम्स हेल्दी नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और आपने सुना होगा कि मैं यहाँ से चबा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे दर्द होता है। तो च्यूइंग या ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसकी वजह से हम कितने सारे उसके जो न्यूट्रिशंस, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो यूटिलाइज करने में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में मुश्किल हो सकती है।
और स्माइल, ब्यूटी, अपीयरेंस और फ्रेश ब्रेथ, ये काफी रोल होता है ओरल हेल्थ का। कितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको भी बोलने में, जैसे ता अगर बोलेंगे तो हमारे जो टंग होते हैं वो अपर टीथ के साथ लगते हैं, तो अगर दांत नहीं होंगे या अच्छे नहीं होंगे, हेल्थी नहीं होंगे, या वहाँ पे मिसिंग टीथ होंगे तो स्पीच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं सलाइवा में होते हैं, ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं सलाइवा से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज या बुलिंग या डिप्रेशन हो सकता है जब छोटे बच्चों को दांतों आगे के लेफ्ट से फ्रंट टीथ में कुछ कीड़े लगे हो, कैविटीज लगे हो, वो ब्लैक हो, तो बच्चे शाई होंगे, अच्छी तरह से स्माइल नहीं करेंगे, वो दबा कर रखेंगे, स्माइल भी प्रॉपर नहीं करेंगे, बैड ब्रेथ आएगी उनके मुंह से तो वो शर्माएंगे, तो उससे उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको बुली कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उससे फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। बच्चे शाई और भी ज्यादा हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, उनकी इमोशनल ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, साथ साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये। और जनरल बॉडी हेल्थ के साथ भी एसोसिएशन होता है। कितने सारे अमेरिकन ब्रिटिश जर्नल्स में ये पाया गया है कि जो गम्स अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ वाले गम्स होते हैं, इन्फेक्टेड गम्स होते हैं, तो उसमें से जो बैक्टीरियाज होते हैं, माउथ में अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे बैड एंड गुड बैक्टीरियाज, तो ओरल हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, इन्फेक्टेड गम्स होंगे, तो उससे जो बैक्टीरियाज होंगे वो ब्लड में जाएंगे और वो ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएंगे और हार्ट अटैक के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं अगर गम्स की हेल्थ खराब हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, वहीं पे दूसरी साइड पे अगर माउथ ओरल हेल्थ सही नहीं हो तो उससे डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायबिटीज का केस जो है वो बोथ वेज जाता है, ओके। डायबिटीज अगर हो अनकंट्रोल तो उससे गम्स की कंडीशंस खराब हो सकती है या एब्सेस बन सकते हैं, और दूसरी तरफ पे अगर दांतों की या गम्स की हेल्थ खराब हो तो उससे डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है। तो डायबिटीज में बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड्स में होता है, तो इसलिए शुगर्स को लिमिट करना चाहिए मील्स के टाइम पे। और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर से डैमेज तो ठीक होता ही है, बट लाइक से ओबेसिटी, इसलिए ओरल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपने देखा। स्मोकर्स और अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं वो ज्यादा प्रोन होती है माउथ कैंसर, ओरल कैंसर होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन किया जाए तो उससे माउथ कैंसर जो होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और 90% सर्वाइवल रेट हो जाता है। ये एक NHS इंग्लैंड के सर्वे में पाया गया है। और अगर डिले डायग्नोसिस हो, जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, तो उनको अगर डिले डायग्नोसिस हुआ तो उनकी सर्वाइवल रेट 50% प्लमेट हो जाती है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ या फिर सीइंग अ डेंटिस्ट रेगुलरली, ये आप समझ सकते हैं इन सब बातों से। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन में दांतों का क्या कि कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं अच्छे दिखने के लिए, तो हमारे ये जो कि नेचुरल ब्यूटी है, जो कि हमारी दांतें जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। क्योंकि जब हम हंसते हैं तो वो शो होता है, आपकी कैरेक्टर वो उस पे डिपेंड करती है कि आप अपने सेल्फ को कैसे कैरी करते हो। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमें अपनी दांतों की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए? दांतों की ब्रशिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए? क्या आप हमारे ऑडियंस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके। अलवकाया खैरुन मिनल इलाज, ये अरबिक में बोलते हैं। और जानकारी या सुरक्षा ही बचाव है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीजें प्रिवेंशन में। ब्रश आ गया, ओके, ब्रशिंग टेक्निक आ गया, मॉडल्स हैं, तो उससे हम हल्का से दिखाएंगे आपको जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्यादातर हमारे पेशेंट्स यही सवाल करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ADA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना होता है दिन में, ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड नाइट, रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले, ओके। ब्रशिंग के लिए
ब्रश कौन सा, किसी भी कंपनी का, ब्रश टाइप कौन सा, सॉफ्ट टूथब्रश, ओके, ट्वाइस डेली, और मिनिमम 2 मिनट्स, एटलीस्ट 2 मिनट्स एज पर ADA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। टेक्निक बहुत सारे होते हैं ब्रश करने के टेक्निक, हम आपको मॉडिफाइड बास टेक्निक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि टूथपेस्ट कौन सा, किसी भी कंपनी का जिसमें फ्लोराइड हो, ठीक है ना। सो सॉफ्ट ब्रश ट्वाइस अ डे, मिनिमम 2 मिनट्स पर सेशन, रात को सोने से पहले, खाने के बाद। ब्रशिंग टेक्निक के लिए मॉडिफाइड बास टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर हाथों की डेक्सट्रिटी अच्छी है तो उसमें हम लेट से, अगर हम ऊपर के दांतों से स्टार्ट करें तो हम टूथब्रश को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, अपर जो गम है वहां पे डाल के पीछे के दांत से स्टार्ट कर रहे हैं, अपर लेफ्ट से, तो टिल्ट करके ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा राउंड 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 करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर के दांतों के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन करेंगे, जिससे कि वो सरफेस, बाहर का सरफेस क्लीन हो जाए। फिर हम नीचे के दांत में जाएंगे, वहां पे भी हम ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे टूथब्रश के ब्रिसेस को लगाएंगे और राउंड राउंड किया, और उनके लिए ऊपर की डायरेक्शन में हम करेंगे कि सारे उसकी सरफेस। सर आपका कहना है कि ये जो अपर टीथ होता है उसको हम लोग डाउन टूवर्ड्स ब्रशिंग करें और जो ये लोअर टीथ है उसको अपवर्ड हम लोग ब्रशिंग करें। एग्जैक्टली, मसूड़ों से लेके ऊपर की साइड पे जहाँ पे खाना चबाते हैं उस तरफ पे, और ऊपर के लिए नीचे हो जाता है, ओके। या अगर कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए अप एंड डाउन, राउंड राउंड, इन एंड आउट नहीं करेंगे, इन एंड आउट नहीं करेंगे, अप एंड डाउन, राउंड राउंड करेंगे, ओके। ऐसे ही अंदर के इनर सरफेस को भी क्लीन करना जरूरी होता है, सिर्फ बाहर के सरफेस को क्लीन करने से नहीं होगा, इनर सरफेस को भी क्लीन करना है। उसमें भी हम 45 डिग्री पे लगा के और फिर राउंड राउंड करके सरफेस पे क्लीन कर दिया। सामने के दांत को अंदर से साफ करने के लिए स्ट्रेट लगा के उसको बाहर निकाला, ऊपर के दांतों में भी हमने स्ट्रेट किया, उसको क्लीन किया बाहर निकाल के, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो च्यूइंग सरफेस है, जहां से हम दांतों से खाना चबाते हैं, उसको भी ब्रश करना जरूरी है। उसको ऐसे से हम ब्रश करेंगे, क्योंकि पीछे के दांत जो होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे खाना फंस जाता है, स्टिकी फूड जो होता है वहां पे फंस जाता है, उसको भी क्लीन करना जरूरी है। और उसके बाद ये सब हमने क्लीन सारे सरफेस को किया, उसके बाद हम भूल जाते हैं, हमें टंग, जीभ को भी साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टंग में भी बाहर से सॉफ्ट या क्लीन लगता होगा, लेकिन टंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस होते हैं। उसके अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो टंग अप एंड डाउन होते हैं बहुत सारे, ओके। तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस या फंगी हो सकते हैं, तो उसको भी क्लीन करना जरूरी होता है। कभी कभी ब्रश के पीछे इरेगुलर सरफेस होता है, उससे क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी टंग क्लीनर्स होते हैं, उससे क्लीन किया जा सकता है, ओके। अब इस चीज बात आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दांत के बाहर के आउटर सरफेस को क्लीन किया, हमने इनर सरफेस को क्लीन किया, हमने च्यूइंग सरफेस को क्लीन किया, ओके। लेकिन दो दांत के बीच के सरफेस जो होते हैं ना, वहां पे हमारी नॉर्मल ब्रश नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल या तो फ्लॉस होते हैं, फ्लॉस जो थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होता है, या फिर हमारे पास ये स्पेशल ब्रशेस होते हैं, छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं जो दांतों के बीच में एंटर करते हैं। ये छोटे छोटे ब्रशेस को इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं, एक छोटा सा डिफरेंट साइज होते हैं। मैं छोटा सा आपको ये येलो वाला निकाल के दिखाता हूँ। दो दांत हैं, उनके बीच में खाना फंस जाता है नेचुरली, ओके जी। और वो नॉर्मल टूथब्रश दांतों के बीच में नहीं जाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसे इंटरडेंटल ब्रशेस को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये वंस इन अ डे, यानी रात को सोने से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार, ओके। हमने दांतों के बीच में डाला और ये आर पार किया विदाउट हर्टिंग द गम्स पे ज्यादा पुश नहीं करेंगे, दो दांत के बीच में इंसर्ट किया, और ये जो भी खाना फाइबर्स होते हैं या जो नॉनवेज खाते हैं उनके चिकन या मटन के फाइबर्स घुस जाते हैं, या फिर कोई स्किन ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल का स्किन
एंटर किया, या फिर बहुत सारे और भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, संतरा होते हैं, उसके फाइबर घुस गए तो हम इस इंटरडेंटल ब्रशेस से क्लीन कर सकते हैं उसको, ओके, जो कि नॉर्मल ब्रश से साफ नहीं होता है। ये सब किया और फिर हमें माउथ वॉश, जिसको गम्स से ब्लीडिंग होती है उसको माउथ वॉश की जरूरत होती है, या फिर हमें गुनगुना पानी में नमक डाल के सॉल्ट वाटर रिंसेस, ओके, ये हम कर सकते हैं नाइट में सोने से पहले। तो ये बेसिक ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक ब्रशिंग टेक्निक्स और टूथपेस्ट कोई भी जिसमें कि फ्लोराइड हो, और उसके बाद हम या तो फ्लॉस इस्तेमाल करें या फिर जो ये ब्रशेस मैंने आपको दिखाए छोटे वाले ये इस्तेमाल करें, और सॉल्ट वाटर रिंसेस या माउथ वॉश इस्तेमाल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सर, जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट बताया था कि ये जो छोटे ब्रशेस है जो हमारे दांत के बीच में साफ करने के लिए, ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये नॉर्मली मेडिकल शॉप से अवेलेबल रहती है? एग्जैक्टली, ये बहुत सही सवाल है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इसलिए मालूम नहीं होता है। ये नॉर्मल फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे टूथ ब्रश होते हैं, जहाँ पे टूथपेस्ट होते हैं, वहाँ पे फ्लॉस भी आता है, फ्लॉस धागे की तरह होता है, ओके। और साथ में ये भी इंटरडेंटल ब्रशेस के नाम से आते हैं। तो इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, ये उनके डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि ब्लैक है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, ये ग्रे हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये सबसे थिन होता है पिंक वाला, ओके। तो ये वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अपने डेंटिस्ट से रिकमेंड करा सकते हैं कि कौन सी साइज आपको फिट होगी, क्योंकि सामने के दांतों में नॉर्मली कम स्पेस होते हैं तो उनमें थिन वाली इस्तेमाल होती है, और पीछे ज्यादा स्पेसेस होते हैं पीछे के दांतों में, तो उसमें हम वाइड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फंस जाते हैं, तो हम अक्सर टूथपिक का यूज करते हैं, तो क्या हम ये टूथपिक का जो हम लोग करते हैं, क्या ये हमारे दांतों के लिए सही है कि गलत है? एक्चुअली यही इनका फंक्शन है। इंस्टेड ऑफ टूथपिक मैं इस टूथब्रशेस की बात कर रहा हूँ जो ब्रश के फॉर्म में होते हैं। और टूथपिक कितनी बार यहाँ पे सिंपल नहीं है, लेकिन टूथपिक कितनी बार हर्ट कर देते हैं, गम्स को पुश किया और गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गई ज्यादा, एग्जैक्टली हार्ड होते हैं। तो अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करें तो वो गम्स को हर्ट करेंगे, गम्स में अल्सर हो सकते हैं, गम्स से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, गम्स को लेसरेशन हो जाती है, ओके। ये जो होते हैं छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं, ये यहाँ पे ब्रश छोटे से लगा हुआ है, इसको हम जेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के बीच में, और ये बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। कुछ लोग फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं, बस फ्लॉस में जैसे कि फिंगर में डाल के और फिर करना उनको डिफिकल्टी होती है, एंड दिस इज वेरी इजी टू यूज, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि थंब से और इंडेक्स फिंगर से हमने पकड़ा और सामने ब्रश लगा, उसको हमने हॉरिजॉन्टली लगा दिया, ठीक है ना, हमने उसको दांतों के बीच में डाल दिया और फिर आर पार थ्रू हो गया, स्लोली जेंटली विदाउट हर्टिंग द गम्स। तो टूथपिक से बेटर ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा ये। जी, आपने सही कहा। हमारे जो व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें बताया, क्योंकि अक्सर हमें इस बारे में जानकारी नहीं रहता। हम जैसे भी करके ब्रश कर लेते हैं कि हमें बस ब्रश करना है, कर लिया, बट हमें जो इसकी जो टेक्निक होती है, जो हमें जिस तरह से करनी चाहिए, वो टेक्निक हमें आज तक नहीं पता था, जिनके आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स को पता चला। तो अब वो आपकी इस सलाह के थ्रू से वो अपना ख्याल रख पाएंगे अपने दांतों का ठीक से। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे जाने माने पेडियाट्रिक डेंटिस्ट डॉक्टर सुमन मिश्रा जी। तो अगले एपिसोड में और सवालों के साथ फिर हम इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं मुनाज आप सबसे विदा लेती हूँ। Welcome back to the studios of Heealth, Kuwait, dear viewers, as we begin our first phone call interview this evening, joined by Dr. Sumant Mishra, who is a pediatric dentist. Doctor, hello, are you with us? Yeah, hi there, good afternoon, how are you? Good afternoon to you, doctor. I'm doing very well. How are you doing? Yeah, I'm doing fine as well, thank you very much. Now, doctor, part of what makes us well is that our dental hygiene is in check. So talk to us about the importance of oral health awareness for adults and children, and why it is something that should never be neglected. Yeah, mouth forms the gateway
and portal of entry for the whole body. Whatever we are taking for the body, whatever we are eating or drinking, that goes through the mouth. So if the mouth is healthy, all the structures inside the mouth, teeth, tongue, soft tissues, hard tissues, Everything. of the mouth is healthy, then the health of the whole body is reflected on that. So Okay. it's very essential, not only for chewing the food, also for speaking and some of the words and while talking. Also, the face value, appearance, some of the teeth forms the cornerstone of mouth and facial beauty, as well as when we realize the importance when the wrinkled lips or sagging lips happen. And also, the main important thing is there is an association between the systemic conditions, the health of the whole body and the health of the mouth. And a lot of research work going on recently on this thing. So it's basically about the oral health as well as the overall health. Right. And prevention is better. So when we are aware, when the people are aware, when the adults and the kids are aware, they can do the preventive measures. So that's why the importance of oral health awareness programs. Very well, doctor. So you've pretty much described to us this very direct link and association between the mouth and general health. Is that so? Yeah, mouth and general health, basically, if we talk about the, let's say, heart conditions or the gum conditions. So if there is a lot of research work showing if there is inflammation of the infection of the gums, they reflect on there are more risk factors for the heart diseases. So let's say there is what we call a gingivitis or periodontitis, gums or periodontium diseases or inflammations. The bacteria present inside, they go through the arteries, blood vessels, and go to the heart and then affect the heart. A lot of research have proved the connection of the risk factors increases when there is more gum diseases. So oral health is important, essential. Also in cases of diabetes, so that in cases of heart, it's one way. So Yes. gingivitis, gums, inflammation increases the risk factor for heart disease. That's in cases insane. of diabetes, Yes. in cases of diabetes, is two ways. So if the oral health, the mouth, the gums are compromised, more risk factor for diabetes, or other side as well, if there is uncontrolled diabetes, then more chances for oral health diseases, abscesses inside the mouth, things like that. So also the recent researches, especially in the pandemic COVID-19 time, emphasis of oral health is signified. So we have to take care in this pandemic era. Right. We have to make the people aware about that. Well, we always have to take care of our dental hygiene, doctor, but you've mentioned COVID-19. Have you realized that your patients are complaining of different issues, or they're complaining more so during the pandemic? Has it affected our oral health and hygiene in any way? To be honest, this is a very important question, and thank you for raising this issue. The kids and the adults, they are more scared about going to the dentist. They're afraid What to they leave their don't realize- house. Exactly. And what they don't realize, because in the initial stages especially, they were left in the house, so they were not sure about their oral health awareness, their oral hygiene, how to take care of the mouth, and if they are not going to the dentist periodically, how they can manage at home. So when they started coming, after opening up, we learned a lot of things, and they learned from us as well. So we transfer the information to them, how to take care of the mouth, and we made them realize that the oral health, especially nowadays, let's say some of the journals, one of the journals, Journal of Clinical Periodontology, dealing with the gums disease, they found that also we have to put COVID-19 in relation to oral health. So it's very much documented before that the inflammation of the gums can cause respiratory diseases, and COVID-19 is one of the respiratory diseases, okay? So it could make symptoms worse. More, yeah, exactly. So one of the studies shows that they are 3.5 times more prone for ICU, intensive care unit admissions, and 4.5 times more need for ventilator. And also the risk for death from COVID-19 in pre-existing gum diseases increases by 9 times, one of the studies shows. So this has to be emphasized to the patients and all our target population, so that they are aware about the importance of simple brushing and taking care of the mouth, oral health.
You know, The prevention you're is very really important. emphasizing that, doctor, and I would not have expected those numbers. They really are quite shocking, and they're emphasizing why it's very important to stay on top of our oral hygiene at all times. Really. You are right. Right. Exactly. And So- yes, doctor, please. Tell me. Yeah, so this pandemic, this microscopic virus is teaching us a lot of things. And we are happy to help, and we really appreciate the role of media and also the government officials and the Ministry of Health and all the authentic government sites and all the official authorities. They are working 24/7, the corona warriors and the scientist fraternity for producing vaccine and all those things. So, and I understand all the community is helping as well. They are listening and they are following the local protocols and the law of the land as well. And the role of media is very essential because you are doing extra efforts to convey this message to the general public as well. So really appreciate. Thank you, doctor, and we appreciate you joining us this evening. So if we were to break down the most important aspects of great oral hygiene, what would that entail? Brushing your teeth, how many times a day would you say? American Dental Association, ADA, recommends brushing minimum twice a day, morning and evening, night before sleeping, after meals. Is there a maximum And- number of times? Because people can also overdo it. Yeah, they can overdo it, but depends on the frequency of sugar intake, especially the kids. So if they're taking more, especially the sticky food, sticky chocolates and all those things which get stuck in the mouth, especially the back teeth for the kids, and the milk teeth more prone for cavities, caries, so the frequency can rise. Okay. But minimum of twice a day with any paste having fluoride and soft toothbrush. Yeah, soft. And- We've emphasized that a lot on the program Exactly. before. And the technique is more important. In short, up and down, round, round. And only toothbrushing is not sufficient. It should be supplemented by floss or interdental brushes, small brushes, which goes in between the two teeth. Yes, to many clean food all the teeth. Exactly. The normal brushes doesn't reach between the teeth. So these flosses go between the teeth, and many of the fibers we eat, fibers of the, like let's say chicken or mutton or non-veggies, or skin for the fruits like apple peel, skin of the apple goes between the teeth and doesn't come out with the normal Right. teeth, the toothbrushes. So we Okay. use floss and mouthwash sometimes, and basically reduce the frequency of sugar intake, especially for the kids. I understand this very We have tough and Ramadan challenging. coming up. Yes, that's going to be very difficult. Exactly. So if you give them sugar, try to limit to the meal times, or if they insist of doing those fizzy drinks and all those things, give them with the meal so the damaging effects get neutralized with the meal, and also Okay. either use the straw, so they you drink with a straw so it goes directly inside rather than damaging the teeth. Brushing before sleeping is very important. Technique of brush is very With important. flossing, So- of course. Exactly. And last but not the least, regular visit to the dentist, because some of the people say that why go to the dentist, there is no pain, but some of the early cavity enamel can't see lesions, exactly, early doesn't have pain, right? So early lesions go ignored, neglected. So if they delay it because there is no pain, it might reach the pulp and deepest layer, and then more appointments are needed and more challenging protocols and procedures. So rather than waiting till that stage, why not do in the initial stage, because the earlier the better, and more best Makes chance for sense. prognosis and saving the tooth. Right. And doctor, just going back to the flossing and the mouthwash, should we do that every time we brush our teeth, or is it less necessary in the morning, for example? Yeah, good question actually, because there's a lot of doubts about that. Flossing at least night before sleeping, and mouthwash also. But also the dentist will recommend, especially the mouthwashes, if there is severe inflammation, infection of the gums, mouthwashes have to be increased. For the normal teeth, flossing and mouthwash in the night before sleeping is Okay. good. Also, instead of mouthwashes, sometimes warm saline rinses if there is not much inflammation of the gums. So that's why regular visit to the dentist and consultation from the dentist. They can see the conditions. Al-Hasabian depends on the cases, how the inflammation, how the infections of the gum, how is the oral health conditions. Right, So right. we will determine based on that. And it's very important that we build a positive image around visiting the dentist. A lot of individuals build this fear from a very young age where they don't want to visit the dentist and so on. So we should emphasize that it is for their benefit.
Of course. Yeah, the parents' role are very important. They Right. have to inculcate the mentoring the children from the beginning. Well, how do they do that, doctor? So what advice would you have to give to parents regarding motivating their children to keep up with their oral hygiene, to love going to the dentist, and to just enjoy brushing their teeth? This is the question. This is the question for the parents, and this is very, very aptly put up by you, because the parents have to inculcate from the home, because if they don't do their homework, then it's more challenging for the pediatric child dentist. So what they can do, they can start improving since the beginning. Like, let's say they can be a good role model for the kids by taking care of their own teeth. What they do, children, basically they learn by imitating. So if we teach them nice things, they learn the nice things. So why not be a good role model? The parents can be a good role model and help them in picking the toothpaste, let's say, by asking them their favorite flavor. So they will be involved in the procedure. So children will feel inquisitive and interested. So involve them in the choice of the color of the toothpaste and toothbrushes. Involve them, like we are talking about, let's go for a walkathon. Let's go for a marathon. Why not go for a brushathon? Yani doing brushing together in a group. Why not go for a 2-minute challenge? So put timer. Nowadays a lot of brushes have timers or something, timers, and then they put 2 minutes challenge. So minimum of 2 minutes, as the American Dental Association recommends. So 2-minute brushing, and monitor child how they assisting and supervising the brushing and flossing of the kids, because kids many times are incompetent to brush, and then schedule their brushing times, and let's say play some songs so that they child-friendly songs, or can use the enjoy. children's. Exactly. Right. Praise the children for their oral efforts, give them rewards, the sticker or gold chart on it, let's say something, and then also talk to them about the nutrition and oral health. Foods to include like vegetables and fruits and milk and all those cheese. Also a lot of amount of water rather than fizzy drinks, yogurt, or juice. Foods to avoid cookies, cakes, and all those things, sugary drinks, frequency. Exactly. And make the brushing fun. Start the oral care early, the sooner the teeth erupts, or make a habit so that when they become big, they don't make tantrums or they don't find it a bit challenging to start brushing. So the sooner the tooth erupts, start making a habit and establish good oral habits also for them. Of course. So these are the few tips for them. Perfect, doctor. Talk to them, explain to them why it's important to take care of their teeth for a wonderful smile at the very least. Oh, yeah, I missed it. Exactly. Well, doctor, we really appreciate you joining us. Thank you very much. Thank you, Kuwait, and thanks. Really appreciate your efforts to convey and disseminate this message to the community. And good luck. Thank you. Take care. Bye-bye. So, dear viewers, with that, we were speaking to Dr. Sumant Mishra, who is a pediatric dentist, and as he's advised, please encourage your children to enjoy brushing their teeth and do so from a very young age so that we can encourage them to build positive habits. Now we head over to our next report prepared for you this evening from the World Health Organization, and then viewers, we have been joined by our final guest for tonight, the pediatric dentist, Dr. Sumant Mishra, who will be talking to us about the importance of oral hygiene. Good evening, doctor. Good evening. It's a pleasure to have you with us again on Heealth Kuwait. Thank you very much, the Heealth Kuwait channel and the management. Thanks a lot for always doing your oral health campaign. Thank you so much. So, doctor, today we're going to be talking also about kids, which is great, and their health awareness. So, can you talk to us about the importance of health awareness when it comes to oral health awareness for kids and even adults?
Yeah, if we talk about pediatric dentistry, being a pediatric dentist, child dentist, let me start by saying that our motto, we say, Auladak mithal auladi, like your kids is my child. Yes. So we treat each child as our own child. Talking about oral health awareness, still in many countries, the oral health is ignored and neglected, especially in the fast age. And I met many patients who say, "Doctor, I don't have time to brush." As I was shocked. Yeah. So the mission is to make them aware about the oral health. Mouth forms the portal of entry, and digestion process starts right from the mouth, where there are a lot of digestive enzymes and saliva. Our oral health is healthy, and they can eat, chew the food properly. They can utilize the nutrition available in the food in a nice way, and that determines the general health, body health of a person. So it's very essential. So I wanted to ask you about that. What is the association between the mouth and the general health? A lot of people don't know that these things are really connected to each other. Exactly. This is very interesting topic you raised right now, because people are really unaware about them, and especially in the corona times, we know that if there is associated comorbidities like heart, liver, kidney, respiratory, like lungs, so if they are compromised, then more chances of COVID-19, God forbid anybody having. So a lot of research journals in, like, let's say American journals or British journals, they have found in their research works that there's association between the, let's say starting with the cardiovascular, heart diseases. So if the oral health, especially gums, of the gums is compromised, then there is risk factors for cardiovascular, heart diseases like heart attacks. So a small issue with the gums could really lead to very serious problems. Sure, people have to realize that gingival infection, inflammation of the gums lead to bacteremia. The bacteria flow through the blood to the heart, and then they might compromise the health of the heart. As well as research have found out in diabetes, it's both sides. So if the oral health is compromised, then uncontrolled diabetes. And if it's uncontrolled diabetes, it may lead to multiple oral abscesses, the dental abscesses or gum conditions, which is compromised. And respiratory diseases as well, which is very essential in COVID-19 duration. Of course, since you mentioned COVID-19, can you talk to us about the oral health and hygiene during COVID-19? Did you find that a lot of parents came back with their children after lockdown with dental issues? Was that an issue after COVID-19 lockdown? Yeah, exactly. Because during the lockdown times, we were only seeing emergency cases like abscess or swelling or extraction of the tooth, which needs urgent attention. And that's why it was a bit compromised and they could not do their routine elective treatments. But when we opened up, slowly, now they're coming up, and they're coming up with other issues like fillings, restorations, and steel or crown, everything. So you are right, actually. They have started coming up, but they have come with a lot of pessimist thoughts and maybe sometimes scared. The kids especially are scared to see us like in a different dresses and everything. Face shields, I'm guessing. So much gear just for that appointment. Exactly. So parents' role here become very important, that they have to do the behavior shaping. It starts right from the home. The parents have to train the kids that they might see a different kind of dentist, not the dentist they used to see before. Now we are face masks and protective gears, as you rightly said, personal protective equipments, PPE kits, and also the system of the center or the hospitals have changed. Like right in the front gate, we have trial system where there's temperature monitor. That's right. And then from there we distribute. Also in the waiting area, there is Mitrin 2 meters gap. And of course, COVID-19 has really changed the way, we even go to doctors. It's changed everything lately. What's the advice for parents you have regarding motivating their kids to keep their oral hygiene? I think that's a fight every parent has with their kid on a daily basis. Lil Asif, unfortunately, parents are very busy. Nowadays, both parents are working and they find a bit challenging to spend quality times with their kids. And which is unfortunate for a kid, and I feel for them. And what I have realized after talking to the parents, that they come only in the emergency when the kids start crying, and sometimes it's already reached a late stage, even though we try to save the tooth. But
is a bit compromised when they come to us late. Okay, talking about the motivation from the parent side, the parents at home should be the role models for the kids, and till 5 to 6 years of age. Till the time a child doesn't learn how to tie own shoelaces, they have to be supervised by the parents for their brushing. So the mom and dad should teach them the proper brushing techniques, or supervise them and make it a habit, or make like 2-minute challenge. Yes. So 2-minute brushing with them, or like we talk about marathon, we talk about walkathon, but we should talk about brushathan. Brushing your teeth longer. Brushing in a group. So motivate them like that. Give some motivation stickers or some coloring books to motivate them, so that the kids can be really motivated. And Doctor, you have props with us today. Would you like to show maybe the viewers how their kids could be cleaning their teeth? Yeah, this is interesting. Sometimes models can make it easy. So we have brushes. This is for the girls, like pink, and we have manual toothbrushes, and we have electric toothbrushes for special needs or adults who are challenged for the brushing. And this is the model for the tooth. People keep asking about the brushing technique. Actually, American Dental Association recommends 2-minute brushing every day, twice daily, with fluoride toothpaste. ADA recommends, American Dental Association recommends soft for bristles children, for everybody. Okay. So when we buy the toothbrushes, we should see soft, not hard, not medium, and technique becomes very important. So go at an angle and then gently round, and same we will do all the surfaces of the teeth. And also don't forget about the chewing surfaces at the back. Many of the sticky food items get lodged there, and it's difficult to come out. Talking about the front one, at the back we have to make it perpendicular and up and down strokes. Same here. Also, it's not only about the tooth, it's also about the cleaning of tongue. The tongue should not be forgotten. And see, between two teeth, the normal brushes doesn't go there. So we will use floss, or we will use interdental brushes. These are brushes that come in different colors and color codes depending on the spaces between the teeth. This is thin, and this is more wide. You see, wider. So let's say interdental brushes work by placing them in between the teeth, and then that cleans the food particles stuck between, which is not cleaned by the normal brushes. Or we can use floss. Cleaning the tongue, we have special tongue cleaners, or some of the toothbrushes at the back have striations, irregular surfaces. Which is really important. Exactly. Tongue can harbor a lot of bacteria, viruses, and may have some infections like candidal infections. So we have to be careful about brushing the tongue as well. And the food habits at home, the parents have to teach them the healthy food dietary habits. And reduce the frequency of sugary snacks. That's really important to mention. Sugar, it's not a big deal. You can have it, but in smaller amounts. The fizzy drinks, if they use with the food for the kids, it will dilute the effect. We cannot stop totally the kids. Of course. It's a bit challenging, but we can give them during the meal time. So with the meals, it will dilute the effect. And juices which good for the body but harmful for the teeth, this can be used, or the fizzy drinks with the straw, so it will go inside directly. That's great advice, I think, the straw situation. Exactly. Okay, so let's move on to the updates in the field. What are the latest updates, and what has changed lately? Yeah, so as we talked about the restrictions during this coronavirus times, so when the patients go there, we have appointment systems to avoid zahma, too much crowd. And normally both mom dad used to come. Now we ask one of them to wait outside, or maybe in the car, sayara. And then the moment they enter the center or the hospital, there is a trial system where the nurses actually take the temperature, monitoring of the temperature, to see if they're high or normal range. If there is high, we have to refer them to the unit where they need further investigations for COVID-19. If they're in the normal range, then they will go to the reception. The receptionist will not greet them with handshakes or anything. There is a distance barrier, or there is a barrier placed. Even the waiting area, there is a spaces. And when they enter the clinics, we have between two patients, 15 to 20 minutes gap, as per the suggestions of WHO World Health Organization as well as Kuwait Dental Association. So we have to follow the international authorities and also the local authorities. Of course, and also that's just helpful to everyone's health, the doctors, the family. Right before we end this interview, do you have any final advice for the parents on how to make doctor visits easier for their children?
Yeah, the parents have to support us also. They have to understand the responsibilities of a pediatric dentist, child dentist, and they have to openly tell about the medical conditions of the child, because sometimes if they hide or they are not aware, they don't tell, then quality of health care, dental care suffers. Right. So the parents have to support us also. Exactly. It's a big role they play, the parents, before getting to the doctor's office. Thank you so much, Doctor, for this interview and all the advice you gave our viewers today. Thank you very much. We had with us pediatric dentist Dr. Sumant Mishra. Dear viewers, we have reached the end of tonight's episode. I hope you enjoyed our various reports that always aim to keep you updated on the latest events here in Kuwait, and of course our interview segments that majorly focus today on health awareness. Thank you for watching, and until we see you next time, have a wonderful evening and stay safe. And today here I have Dr. Sumant Mishra. Why is he here at Nepal? We will ask him and we'll make a beautiful conversation with him. First of all, let's welcome him. Hello, sir, namaste, and welcome to Nepal. Namaste, Sevaru, Kishal Khabar. Where do you learn this word Sevaru? Greeting Sevaru. I have many brothers and sisters from Nepal, from Limbu family. So they taught me about Sevaru. And Namaste and Namaskar is a famous tradition in India as well. And we are brothers and sisters, India and Nepal. Okay. Most of the people, they might don't know about you. So please give an introduction and start. Yeah. I am Dr. Sumant Mishra, a pediatric dentist working in Ministry of Health, Kuwait, since the last 10 years approximately. And before that, I did my master's program in clinical pediatric dentistry from Queen Mary University, London. And my postgraduate certificate courses from University of Helsinki, Finland. And I was SHO trainee registrar in Scotland, one of the maxillofacial surgery units. Why are you here at Nepal? I am here in Nepal to serve my brothers and sisters, because the aim of our medicine and dentist profession is to serve the society irrespective of caste, creed, region, religion. So we are basically like doctors, dentistry, science frontier without border, and we believe in Vasudha Kutumbakam, meaning Vasudha Eva Kutumbakam, meaning the whole world is like a family for all of us. Before also you have visited Nepal and have done your dental campaign. And this is your third campaign here at Nepal. Right, you're right. What is the purpose of this dental camp? Most of our brothers and sisters are aware about the health, general body health, but somehow in pressure or in fast modern society, they forget about their teeth. And teeth is the most essential part of our body, because everything we eat, even when we talk, when we smile, the teeth plays a very essential and important role. So we have to be aware about the role of our teeth and dentition. That's what I feel we have to make awareness. As a dental professional, we have to make awareness among the society, because prevention is better than cure. Okay, what is the condition of dental hygiene of Nepalese people? Yeah, I found it very interesting that somehow, because of many issues, they are ignoring, and we need to do a lot of work to improve their hygiene and oral health. Most of the people are very unaware of this thing, dental hygiene. Yeah, you're right. Okay, now let's talk about your plans and policies and objective of this dental campaign. What is the main objective, main purpose of this dental campaign, and why you are here at Nepal serving free of cost? I met nice brothers and sisters in Kuwait from Nepal, and when I started talking to them, I feel a connection from deep within my heart, and it really touched me to be aware about their
health conditions, especially oral health. So I came here, I visited twice, and this is the third time because I feel a sense of duty to improve their oral health care and awareness. And I think in future we plan to do it more on a regular basis, and we talk to the health ministry to make a collaboration with us so that we can do on a regular basis and improve the services to our Nepalese brothers and sisters. How long do you want to take this campaign? Till my last breath. Till your last breath. It's interesting. This is also a kind of social service. Why you're inclined in this field? Why you're inclined in servicing the people? It gives us immense satisfaction when we took our degrees and master's program. Whenever we took our degrees, we took an oath that we will serve the society. This is a cause for which our heart beats, and we feel, even though we didn't eat the whole day, we never eat the whole day at times, but when we serve the society and the society feel happy and they feel go out of our clinic happy and satisfied, our stomach is full. We don't feel hungry. Okay, if we talk about your job profession, you're a full-time dentist there at Kuwait. You're working under the health ministry, but you manage your time somehow to serve the people, to cure the people of South Asian countries. How do you manage this time? Yeah, see, we can see it as an art. If I see it as a work, we get tired. But if we see it as an art or a play, joy to serve the society, we get positive energy and we don't get tired. And then especially during the weekends, like this time we have special holidays going on. So we can combine like medical tourism plus little mingling with our brothers and sisters from Nepal, or seeing the nice beautiful places. Reminds me of Switzerland also. Nepal is compared to Switzerland too. I think the government has to work nicely, and has got very nice. Nepal has got really beautiful scene, and the government has to work also. Okay, you have talked about health tourism, or what you have said. Yeah, medical tourism. Medical tourism. Yeah. How do you see this thing, and what the government have to do to prosper it much more? Yeah, I've seen a lot of changes from the Nepali government in the last 2 years. I can see a lot of changes going on, nice activities going on, and the corruption is getting less now. The government is working really hard. We are aware the government is really working hard, and the government is doing a lot of activities, and the people, most important, people are getting aware, and people has to work from their side as well to help the government implement those policies. So it's both sides, government plus the people. So the people are helping, and I'm seeing the Nepalese brothers and sisters are spread all over the world, and all the remittances, foreign currencies coming in Nepal, and the government checking all those corruption and all those things. Is really sounds good for Nepal and the people. Okay, let's get back to dental campaign again. So when you are visiting Nepal next time, and what is your purpose of the next dental campaign? Yeah, depends on how we can liaise with the Ministry of Health of your government, and step by step we can try to make nice camps. We can try to do the services, free services to the society, to the places where far reach, where is limited, the dental services are not reaching. So hopefully we'll work towards it step by step. Very soon you'll do a next campaign again here in Nepal. The soonest possible we get opportunity will come. Okay, now let's get some personal. We talk about dental campaign and dental health much more, and again we talk about medical tourism too. So we are here, we can see so nice view of this Nagarkot area. From this Nagarkot area we can see this, what is this place called? Bhaktapur. We can see a very nice view of Bhaktapur. So how do you find Nepal? I see Nepal has a natural beauty, and it has to be revel more, and more promotion of the tourists should be done. I think your government plus your
society is really doing something nice, and I can see this year is trending Visit Nepal 2020. Yeah. This is very nice theme. You all the brothers and sisters from Nepal, I can see in their DPs, and I can see their Facebook, and everywhere I can see Visit Nepal 2020. So you are also here to visit Nepal 2020 as a medical purpose. Yeah, sure. It will be combination. Basically, you are from India. Yeah. India is our neighborhood country. Yeah. So, how you can relate Nepalese people? We have long tradition going back to. I remember about the old ancient history civilization where in Ramayana we remember Ramaji marrying Sita ji from Janakpur. So it reminds of the deep history and connection between India and Nepal. Yeah. So and we are still working towards it. We have nice collaboration connection, and I can see all the brotherhood between Nepal and India. Sometimes there comes conflict too, but though we are brother and sister. Exactly. These are minor issues, and our brothers and sisters are working to eliminate. We have to overlook many small issues, and we say in Sanskrit, Subhasitani, Ayam nijam parveti garna luguchetam udar chiritanam tu vasudhaiva kutumbakam. Ayam niti, Ayam nijam. This is my parveti. That is yours. Veti eti garna. Counting like this. Laguchetam, small heart people do like this. This is mine, this is yours. Udar charitanam tu, big hirday, yani the big hearted people, tu, to. For them, vasudhaiva kutumbakam. The whole world is like a family. So it's just boundaries created by man. We created India and Nepal boundaries. Otherwise, it's the same world. I'm so surprised. You know this Sanskrit so well. How? Yeah, our teachers, I owe them a lot. They taught us nice things. And Subhashitani, we learned Sanskrit in our school as a curricula. So I love those because deep thought meanings. And I believe in the proverb, old is gold. Now let's get more personal. What's your age? Let me know about the age. It's for you to find it out and me to know. Let it keep a surprise, okay? Okay. I'll guess and I'll say you're off here. But you are still a bachelor. Yeah, some issues somehow. Why? Haven't you found your perfect soulmate or what? It happens. 5 fingers are not the same. So sometimes, even though we are nice, but sometimes there is issues. So we cannot. Okay, you're so good at your career. Don't you think now you have to move on your family life too? Sure. My heart beats for a family. But we have to find the right soulmate, so that if there is right soulmate, the family is happy and quiet and nice. We can focus on concentrating on our profession and the social services. Okay, you are waiting for a perfect soulmate. Hopefully one day. Okay, if there is anyone, comment below and contact him. Anyway, now we are at the end too. What you want to say about your campaign, about Nepal, about yourself, about me, about everything, about this beautiful view? What do you want to say then? I love the brothers and sisters in Nepal, and I am here to serve the society as much as possible. Any services for me, anything, till my last breath, I am here. I am open to questions or suggestions or constructive criticism. So my brothers and sisters from Nepal, always welcome. Okay, how can we connect you? How can we get connected to you? Is there any social media that you want to share? Yeah, I am in Facebook and Instagram as Dr. Sumant Mishra, and most of the time I'm active on Facebook, so Instagram as well. So. Okay, thank you so much for your kind gesture to Nepalese people, for your dental campaign, so that many of us are getting facilitated. Thank you so much, and I hope you'll visit Nepal very soon.
Sure, and thanks a lot for being a nice host, and I really appreciate the nice gestures from your side as well. Thank you very much. Take care. Namaste. गुड आफ्टरनून, मैं मोनाज आप सभी का सोशल संवाद में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़े हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे आज की गेस्ट है डॉक्टर सुमन मिश्रा, जो कि कुवैत से ऑनलाइन हमारे खास शो में जुड़े हैं, जो दांतों की समस्या और देखभाल के संबंध में आपको जानकारी देंगे। इनके बारे में आपको बताते चले कि ये छपरा बिहार के रहने वाले हैं और अभी कुवैत में एज अ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन मिश्रा, जिन्हें लास्ट 10 इयर्स से उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से लगातार बेस्ट सर्विस देने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से अवॉर्डेड किया गया है। इन्होंने देश विदेश में कई सारे फ्री डेंटल मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की है। अब इनकी इच्छा है कि वो अपने मदरलैंड बिहार में भी फ्री चेकअप कैंप लगाकर लोगों की सेवा करें। हम आपको मिलवाते हैं सुमन मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सोशल संवाद में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को शॉर्ट में और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाज जी और आपके टीम सोशल संवाद को। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, मैंने अपना BDS बैचलर्स मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ किया है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में गया, जहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनर्स के साथ टॉप किया, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में मास्टर्स इन क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री किया। बाद में मैंने स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ कुम्ब्रिया NHS ट्रस्ट में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का पोस्ट पे काम किया, और ऑलमोस्ट 11 इयर्स से कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में काम कर रहा हूं। और इसी पीछे मैं बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज, आउटरीच प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सर्विसेज करता रहता हूं। इसके लिए नेपाल में भी गया, त्रिपुरा में गया, दिल्ली, यूपी में बहुत सारे कैंप्स लगाए, और यहाँ पे भी इंडोनेशियन कम्युनिटी के साथ और भी बहुत सारे कम्युनिटीज, सीरियन, इजिप्शियन, लेबनीज, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैतीज, इन सब के साथ मैं लिएज करके काम करता रहता हूँ एंड उनको सोशल सर्विसेज उनके साथ करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हमारे जीवन में दांतों का क्या महत्व है? हाँ जी मुनाज जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में कितनी बार हम मेकअप करते हैं, आउटर अपीयरेंसेस को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं दांतों के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में, माउथ के बारे में। कितने सारे पेशेंट्स से जब मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम ब्रश करने के लिए। आई वाज शॉक्ड कि ब्रश करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। बीइंग ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट में हूं, तो चाइल्ड डेंटिस्ट का ये रोल होता है कि बच्चों का बिहेवियर शेप करे। सो बच्चे छोटे होते हैं, यंग इंप्रेशनेबल माइंड होते हैं, और वो फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ ए सोसाइटी होते हैं, और अगर हम उनको कम्युनिकेट करें तो वो बातें स्कूल में भी फैलाएंगे और टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो ये जल्दी फैलता है और we can mold their behavior for the future of a society। तो oral health क्यों, oral health, mouth health की importance क्यों? क्योंकि जो mouth होता है, oral health होता है, mouth forms the portal of entry, gateway of entry to the whole body। जो भी कुछ हम खाना लेते हैं, पीते हैं, कुछ भी, सब कुछ मुंह से होकर जाता है। ओके, तो ओरल हेल्थ, माउथ की हेल्थ, डेंटल हेल्थ, गम्स की हेल्थ, इन सब की हेल्थ जो होती है ना, वो पूरे जनरल हेल्थ, एक पर्सन के जनरल हेल्थ की रिफ्लेक्शन होती है। हम जब खाना खाते हैं तो उनको चू करने के लिए, ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, उसके लिए दांतों की हेल्दी दांत होने जरूरी होते हैं। अगर दांतों में कैविटीज होंगे, अगर दांतों में पेन है, गम्स हेल्दी नहीं है, तो
ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और आपने सुना होगा कि मैं यहाँ से चबा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे दर्द होता है, तो च्यूइंग या ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसकी वजह से हम कितने सारे उसके जो न्यूट्रिशंस, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो यूटिलाइज करने में, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में मुश्किल हो सकती है। और स्माइल, ब्यूटी, अपीयरेंस और फ्रेश ब्रेथ में काफी रोल होता है ओरल हेल्थ का। कितनी सारे अल्फाबेट्स होते हैं, उनको भी बोलने में, जैसे कि टी है, ता 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 ता, अगर बोलेंगे तो हमारे जो टंग होते हैं वो अपर टीथ के साथ लगते हैं, तो अगर दांत नहीं होंगे या अच्छे नहीं होंगे, हेल्थी नहीं होंगे, या वहां पे मिसिंग टीथ होंगे तो स्पीच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं सलाइवा में होते हैं, ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं सलाइवा से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज या बुलिंग या डिप्रेशन हो सकता है जब छोटे बच्चों को दांतों आगे के लेट से फ्रंट टीथ में कुछ कीड़े लगे हों, कैविटीज लगे हों, वो ब्लैक हो, तो बच्चे शाई होंगे, अच्छी तरह से स्माइल नहीं करेंगे, वो दबा कर रखेंगे, स्माइल भी प्रॉपर नहीं करेंगे, बैड ब्रेथ आएगी उनके मुंह से तो वो शर्माएंगे, तो उससे उनके जो फ्रेंड्स है वो उनको बुली कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उससे फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। बच्चे शाई और भी ज्यादा हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, उनकी इमोशनल ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, साथ साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये। और जनरल बॉडी हेल्थ के साथ भी एसोसिएशन होता है। कितने सारे अमेरिकन, ब्रिटिश जर्नल्स में ये पाया गया है कि जो गम्स, अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ वाले गम्स होते हैं, इन्फेक्टेड गम्स होते हैं, तो उसमें से जो बैक्टीरियाज होते हैं, माउथ में अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे, बैड एंड गुड बैक्टीरियाज, तो जो ओरल हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, इन्फेक्टेड गम्स होंगे, तो उससे जो बैक्टीरियाज होंगे वो ब्लड में जाएंगे और वो ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएंगे और हार्ट अटैक के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं अगर गम्स की हेल्थ खराब हो। ठीक है ना। और दूसरी चीज वहीं पे, दूसरी साइड पे अगर माउथ ओरल हेल्थ सही नहीं हो तो उससे डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज का केस जो है वो बोथ वेज जाता है। ओके, डायबिटीज अगर हो अनकंट्रोल्ड तो उससे ओरल कैंसर, ओरल अल्सर्स बन सकते हैं, या गम्स की कंडीशंस खराब हो सकती है, या एब्सेस बन सकते हैं। और दूसरी तरफ पे अगर दांतों की या गम्स की हेल्थ खराब हो तो उससे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो डायबिटीज में बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड्स में होता है। और तो इसलिए शुगर्स को जो है वो लिमिट करना चाहिए मील्स के टाइम पे। और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर से डैमेज तो टीथ का होता ही है, बट डाइट से ओबेसिटी, इसलिए ओरल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपने देखा। स्मोकर्स और अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं उनकी वो ज्यादा प्रोन होती है माउथ कैंसर, ओरल कैंसर होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन किया जाए तो उससे माउथ कैंसर जो होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और 90% सर्वाइवल रेट हो जाता है। ये एक NHS इंग्लैंड के सर्वे में पाया गया है। और अगर डिले डायग्नोसिस हो, जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, तो उनको अगर डिले डायग्नोसिस हुआ तो उनकी सर्वाइवल रेट 50% प्लमेट हो जाती है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ या फिर सीइंग अ डेंटिस्ट रेगुलरली, ये आप समझ सकते हैं इन सब बातों से। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन में दांतों का कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं अच्छे दिखने के लिए, तो हमारे ये जो कि नेचुरल ब्यूटी है, जो कि हमारी दांतें जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो वो शो होता है, आपकी कैरेक्टर वो उस पे डिपेंड करती है कि आप अपने सेल्फ को कैसे कैरी करते हो। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमें अपनी दांतों की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए? दांतों की ब्रशिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए? क्या आप हमारे ऑडियंस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके जी, अलवकाया खैरुन मिनल इलाज, ये अरबिक में बोलते हैं। और जानकारी या सुरक्षा ही बचाव है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीजें प्रिवेंशन में आता है।
जैसे कि ब्रश आ गया, ओके, ब्रशिंग टेक्निक आ गया, मॉडल्स हैं, तो उससे हम हल्का सा दिखाएंगे आपको जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्यादातर हमारे पेशेंट्स यही सवाल करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना होता है दिन में, ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड नाइट, रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले, ओके। ब्रशिंग के लिए ब्रश कौन सा, किसी भी कंपनी का, ब्रश टाइप कौन सा, सॉफ्ट टूथब्रश, ओके, ट्वाइस डेली, और मिनिमम 2 मिनट्स, एटलीस्ट 2 मिनट्स एज पर एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। टेक्निक बहुत सारे होते हैं ब्रश करने के टेक्निक, हम आपको मॉडिफाइड बास टेक्निक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि टूथपेस्ट कौन सा, किसी भी कंपनी का जिसमें फ्लोराइड हो, ठीक है ना। सो सॉफ्ट टूथब्रश ट्वाइस अ डे, मिनिमम 2 मिनट्स पर सेशन, रात को सोने से पहले, खाने के बाद। ब्रशिंग टेक्निक के लिए जैसे कि हमने ये देखा है, मॉडिफाइड बास टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर हाथों की मैनुअल डेक्सट्रिटी अच्छी है तो उसमें हम लेट्स से, अगर हम ऊपर के दांतों से स्टार्ट करें तो हम टूथब्रश को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, अपर जो गम है वहां पे डाल के पीछे के दांत से स्टार्ट कर रहे हैं, अपर लेफ्ट से, तो टिल्ट करके ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज एंगल पे लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा राउंड 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 करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर के दांतों के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन में करेंगे, जिससे कि वो सरफेस, बाहर का सरफेस क्लीन हो जाए। फिर हम नीचे के दांत में जाएंगे, वहां पे भी हम ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे टूथब्रश के ब्रिसल्स को लगाएंगे और राउंड राउंड किया, और उनके लिए ऊपर की डायरेक्शन में हम करेंगे कि सारे उसकी सरफेस, आउटर सरफेस क्लीन हो। कहना है कि ये जो अपर टीथ होता है उसको हम लोग डाउन टूवर्ड्स ब्रशिंग करें और जो ये लोअर टीथ है उसको अपवर्ड हम लोग ब्रशिंग करें। एग्जैक्टली, मसूड़ों से लेके ऊपर की साइड पे, जहां पे खाना चबाते हैं उस तरफ पे, और ऊपर के लिए नीचे हो जाता है, ओके। या अगर कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए अप एंड डाउन, राउंड राउंड, इन एंड आउट नहीं करेंगे, इन एंड आउट नहीं करेंगे, अप एंड डाउन, राउंड राउंड करेंगे, ओके। ऐसे ही अंदर के इनर सरफेस को भी क्लीन करना जरूरी होता है, सिर्फ बाहर के सरफेस को क्लीन करने से नहीं होगा, इनर सरफेस को भी क्लीन करना है। उसमें भी हम 45 डिग्री पे लगा के और फिर राउंड राउंड करके च्यूइंग सरफेस पे क्लीन कर दिया। सामने के दांत को अंदर से साफ करने के लिए स्ट्रेट लगा के उसको बाहर निकाला, ऊपर के दांतों में भी हमने स्ट्रेट किया, उसको क्लीन किया बाहर निकाल के, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो च्यूइंग सरफेस है, जहां से हम दांतों से खाना चबाते हैं, उसको भी ब्रश करना जरूरी है। उसको ऐसे हम ब्रश करेंगे क्योंकि पीछे के दांत जो होते हैं ना, वहां पे वो सारे खाना फंस जाता है, स्टिकी फूड जो होता है वहां पे फंस जाता है, उसको भी क्लीन करना जरूरी है। और उसके बाद ये सब हमने क्लीन सारे सरफेस को किया, उसके बाद हम भूल जाते हैं, हमें टंग, जीभ को भी साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टंग में भी बाहर से सॉफ्ट या क्लीन लगता होगा, लेकिन टंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस होते हैं। उसके अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो टंग अप एंड डाउन होते हैं बहुत सारे, ओके। तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस या फंगी हो सकते हैं, तो उसको भी क्लीन करना जरूरी होता है। कभी कभी ब्रश के पीछे इरेगुलर सरफेस होता है, उससे क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी टंग क्लीनर्स होते हैं, उससे क्लीन किया जा सकता है, ओके। अब इसके बाद आई है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दांत के बाहर के आउटर सरफेस को क्लीन किया, हमने इनर सरफेस को क्लीन किया, हमने च्यूइंग सरफेस को क्लीन किया, ओके। लेकिन दो दांत के बीच के सरफेस जो होते हैं ना, वहां पे हमारी नॉर्मल ब्रश नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल या तो फ्लॉस होते हैं, फ्लॉस जो थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होता है, या फिर हमारे पास ये स्पेशल ब्रशेस होते हैं, छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं जो दांतों के बीच में एंटर करते हैं। ये छोटे छोटे ब्रशेस को इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं,
एक छोटा सा डिफरेंट साइज होते हैं। मैं एक छोटा सा आपको ये येलो वाला निकाल के दिखाता हूँ। ये दो दांत के लिए से दो दांत हैं, उनके बीच में खाना फंस जाता है नेचुरली। ओके, और वो नॉर्मल टूथब्रश उनमें दांतों के बीच में नहीं जाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी इंटरडेंटल ब्रशेस को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये वंस इन अ डे, यानी रात को सोने से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार। ओके, ये दांतों में हमने दांतों के बीच में डाला और ये आर पार किया विदाउट हर्टिंग द गम्स। गम्स पे ज्यादा पुश नहीं करेंगे, दो दांत के बीच में इंसर्ट किया और ये जो भी खाना फाइबर्स होते हैं या जो नॉनवेज खाते हैं उनकी चिकन या मटन के फाइबर्स घुस जाते हैं, या फिर कोई स्किन ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल का स्किन एंटर किया, या फिर बहुत सारे और भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज संतरा होता है, उसके फाइबर्स घुस गए, तो हम इस इंटरडेंटल ब्रशेस से क्लीन कर सकते हैं उसको। ओके, जो कि नॉर्मल ब्रश से साफ नहीं होता है। ये सब किया और फिर हमें माउथ वॉश, जिसको गम्स से ब्लीडिंग होती है उसको माउथ वॉश की जरूरत होती है, या फिर हमें गुनगुना पानी में नमक डाल के सॉल्ट वाटर रिंसेस। ओके, ये हम कर सकते हैं नाइट में सोने से पहले। तो ये एक्चुअली बेसिक ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक ब्रशिंग टेक्निक्स और टूथपेस्ट कोई भी जिसमें कि फ्लोराइड हो, और उसके बाद हम या तो फ्लॉस इस्तेमाल करें या फिर जो ये ब्रशेस मैंने आपको दिखाए छोटे वाले ये इस्तेमाल करें, और सॉल्ट वाटर रिंसेस या माउथ वॉश इस्तेमाल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके सर, जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट बताया था कि ये जो छोटे ब्रशेस है जो हमारे दांत के बीच में साफ करने के लिए, ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये नॉर्मली मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल रहती है? ये एग्जैक्टली, ये बहुत सही सवाल है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इसलिए मालूम नहीं होता है। ये नॉर्मल फार्मेसिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे टूथब्रश ब्रश होते हैं, जहाँ पे टूथपेस्ट होते हैं, वहां पे फ्लॉस भी आता है। फ्लॉस धागे की तरह होता है। ओके, और साथ में ये भी इंटरडेंटल ब्रशेस के नाम से आते हैं। तो इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, ये उनके डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि ब्लैक है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, ये ग्रे हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये सबसे थिन होता है पिंक वाला। ओके, तो ये वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो अपने डेंटिस्ट से रिकमेंड करा सकते हैं कि कौन सी साइज आपको फिट होंगी, क्योंकि सामने के दांतों में नॉर्मली कम स्पेस होते हैं तो उनमें थिन वाली इस्तेमाल होती है, और पीछे ज्यादा स्पेसेस होते हैं पीछे के दांतों में, तो उसमें हम वाइड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जैसे कि कुछ खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फंस जाते हैं, तो हम अक्सर टूथपिक का यूज करते हैं। तो क्या हम ये टूथपिक का जो यूज जो हम लोग करते हैं, क्या ये हमारे दांतों के लिए सही है कि गलत है? एक्चुअली यही है इनका फंक्शन भी। इंस्टेड ऑफ टूथपिक मैं इस टूथब्रशेस की बात कर रहा हूँ जो ब्रश के फॉर्म में होते हैं। और टूथपिक कितनी बार यहाँ पे सैंपल नहीं है, लेकिन टूथपिक कितनी बार हर्ट कर देते हैं, गम्स को पुश किया और गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गई ज्यादा, एग्जैक्टली हार्ड होते हैं। तो वो अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करें तो वो गम्स को हर्ट करेंगे, गम्स में अल्सर हो सकते हैं, गम्स से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, गम्स को लेसरेशन हो जाती है। ओके, ये जो होते हैं छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं, ये यहाँ पे ब्रश छोटे से लगा हुआ है, इसको हम जेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के बीच में, और ये बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। कुछ लोग फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं, बस फ्लॉस में जैसे कि फिंगर में डाल के और फिर करना उनको डिफिकल्टी होती है, एंड दिस इज वेरी इजी टू यूज, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे कि थंब से और इंडेक्स फिंगर से हमने पकड़ा और सामने ब्रश लगा, उसको हमने हॉरिजॉन्टली लगा दिया, ठीक है ना, हमने उसको दांतों के बीच में डाल दिया और फिर आर पार थ्रू एंड थ्रू हो गया, स्लोली जेंटली विदाउट हर्टिंग द गम्स। तो टूथपिक से बेटर ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा ये। जी, आपने सही कहा। हमारे जो व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें बताया, क्योंकि अक्सर हमें इस बारे में जानकारी नहीं रहता। हम जैसे भी करके ब्रश कर लेते हैं कि हमें बस ब्रश करना है, कर लिया, बट हमें जो उसकी जो टेक्निक होती है, जो हमें जिस तरह से करनी चाहिए, वो टेक्निक हमें आज तक नहीं पता था, आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स को पता चला। तो अब वो आपकी इस सलाह के थ्रू से वो अपना ख्याल रख पाएंगे अपने दांतों का ठीक से। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज हमारे साथ थे जाने माने पेडियाट्रिक डेंटिस्ट डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी। तो अगले एपिसोड में और सवालों के साथ फिर हम इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं मुनाज आप सबसे विदा लेती हूँ।